Hi dear students, welcome to all to my YouTube channel Stereoisomers Chemistry. Also welcome to all to our institute Stereoisomers Chemistry. My dear students, last class we discussed about the nomenclature for some organic compounds, which will give you the idea about the naming of the organic compounds, and it is better and it is very easy when we will be entry into the second year organic chemistry. Another term in this video I will discuss, that is the isomerism. Isomerism. What do you mean by isomerism? 11th standard already you know this term. Isomers, two or more organic compounds having same molecular formula but different in their properties are called isomers, and this phenomenon is called your isomerism. Two or more organic compounds having same molecular formula. Molecular formula is same, but the compound is represented in different way. They have different names. They have different properties. At that time, we can say these are isomers. For example, I am giving one example. It is better to understand. So, isomers, two or more organic compounds. Two or more organic compounds having same molecular formula, same your molecular formula, but differ in their physical and chemical properties, in their physical and also chemical properties are called isomers. And this phenomenon is called isomerism. In Odia medium students, we can Odia language रे हम कहे समावयवता. So my dear students, isomers, one compound, two or more compounds, but they have same molecular formula. How they are represented in different way? The different way they are representing in different names. At that time, their properties also change. They have different properties. So they can say that they are isomers. So my dear students, to understand this term, it is a better example. Suppose one organic compound, formula C4H10. This is the formula for butane. C4H10, butane. So butane ko represent kari pari pila mane C4H10. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, same 4 carbon atom. Hydrogen put kale eti gote bond achi 3, 2, 2, 2. So this is your carbon, 4 carbon rochi and hydrogen 10 rochi. C4, there are 4 carbon atom and 10 hydrogen. This is butane. This is called your N-butane. N-butane. So now this is your CH3, CH3, CH3 and CH. देखो से carbon 4 अच्छी 1, 2, 3, 4. Hydrogen say 10 अच्छी 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10. So 4 carbon atom, 10 hydrogen. Same compound. This compound name is isobutane. Isobutane. Or we can say 2-methyl propane. 2-methyl propane. What you are see that gote formula compound roche kintu taku mu alaga alaga way re represent करछि. So जेतुटा टर्म माने मु रिप्रेजेंट कली से माने हेले कोन गोटे आइसोमर अर्थात ए फार्मूला रे एटा दुईटा आइसोमर देछि. So these two are the isomers of this having molecular formula C410H10. ए दी जण भीतर कैरेक्टर भी अलगा. ए कोन कैरेक्टर देखा जाय आर बॉइलिंग पॉइंट अधिक आ अपेक्षा काहे कि एटा स्ट्रेट चेन एटा ब्रांच चेन एटा मॉलिक्यूल वीक हे जाउछि. So molecule weak हो गला तार intermolecular force of attraction हो गला automatically boiling point कमी जाउछि. So these have some different properties. So that means my dear students, two or more organic compounds having same molecular formula but different in their physical and chemical properties, but different in their properties, they are called your isomers, and this phenomenon is called your isomerism. Clear? So my dear students, आमे जानिबा वर्तमान isomerism केते प्रकार अछि. We will discuss more about this one. 11th standard आमे जानि छै types of isomers. Types of isomers or isomerism.
There are two types of isomerism basically, you know. One is your structural isomerism, another is your stereoisomerism. Stereoisomerism. Under the structural isomerism, it is also divided. Number one, chain isomerism. Number two, your position isomerism. Number three is your metamerism, functional isomerism. Number four is your metamerism. And another is also tautomerism, but we are not using in CBSE syllabus in 11th standard tautomers. So in your 12th standard we have to knowledge about chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, all that is so we'll discuss more by one. So now this is the structural isomerism. Then stereoisomerism also three types. Your conformational isomerism, geometrical isomerism, another is your optical isomerism. So your stereoisomerism is also three types: conformational isomerism, geometrical isomerism and optical isomerism. Basically हम geometrical isomerism और optical isomerism ऊपर पढ़ुचे book syllabus अनुसार. Clear? So my dear students, that means we will discuss now about all the isomerism. Stereoisomerism again classified conformational isomerism, geometrical isomerism, optical isomerism. This is the divide about isomerism. We will discuss one by one chain isomerism. So one by one I am discussion करें. First is chain isomerism. What do you mean by chain isomerism? To show the chain isomerism, first there are at least 4 carbon atom जो थिबो, at least minimum 4 carbon atom थिले chain isomerism देखे परियो. So what is chain isomerism? Two or more organic compounds having same molecular formula but different in the arrangement of their carbon chain. So structural isomerism means these isomers are changing its molecules, changing the atom within the, changing the arrangement of the molecules, changing the arrangement of atoms within the molecule भितरे. Suppose गोटे bench रे 4 जन पिला अछंती, 1 2 3 4 4 जन पिला बसंती A B C D. Formula same अछि. Suppose C को मु एठी आनी मेरी, B के जाई परियो कि B ऊपर मानिक A को रखी दे परिबी कि D ऊपर C रखी, तो विदिन द मॉलिक्यूल. सो ए बेंच भीतर चेंज आसुची. सो विदिन मॉलिक्यूल भीतर जति किछि अरेंजमेंट रे चेंज आसला, दिस इज योर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. स्टेरियो आइसोमरिज्म स्पेस अराउंड द मॉलिक्यूल. जदि मॉलिक्यूल चारिपटे किछि चेंज आसला अराउंड द मॉलिक्यूल चारिपटे जदि किछि चेंज आसला, स्टेरियो आइसोमरिज्म. सो इफ द चेंज अकरिंग विदिन द मॉलिक्यूल, इनसाइड द मॉलिक्यूल, दिस इज योर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. इफ द अरेंजमेंट चेंज अकर्स अराउंड द मॉलिक्यूल, स्पेस around the molecule चारिपटे के चेंज आसला, स्टेरियो आइसोमरिज्म. सो वन बाय वन we will discuss chain isomerism. First होचे chain isomerism. If the changing of carbon chain होचे change आसला, if there is change of carbon chain, your chain isomerism. For example, your chain isomer butane till 11th standard butane जेमति कहली, it has 2 possible chain isomer. 1 2 3 4 आम अरेंज कर परिया 1 2 3 4. सो कार्बन चेन ये स्ट्रेच अच्छी, ये ब्रांच अच्छी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलरेडी आम देखे सारे. सो 5 कार्बन एटम इफ C5H12 पेंटेन हैज 3 चेन आइसोमर कार्बन. तो एटलिस्ट जोड़े कार्बन एटम थे 3टा चेन, जोड़े चेन 4टा कार्बन एटम थे मैक्सिमम जोड़े चेन आइसोमर देखे पारियो. 3टा कार्बन एटम थे, सॉरी 5टा कार्बन एटम थे, 3टा चेन आइसोमर आम शो कर पारे कार्बन चेन आइसोमर. लेट्स सी. So already you know, having this is a organic compound having molecular formula C5H12 pentane show 3 chain isomer 1 2 3 4 5 CH3 CH2 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 CH3. So 5 carbon atom there, hydrogen 3 to 5 to 7 to 9 3 12. So this is called your N pentane or straight pentane. Clear? Next से 5टा कार्बन को आउ केमिति वे अरेंज कर पाउछु. देखो 1 2 3 4 सी एटी देबा जहा एपट देले मते ता, कारण काउंटिंग रे एपट गले 2 मिथाइल, एपट आसले मते 2 मिथाइल आसीबो. CH3 CH3 H CH2 CH3. नाउ काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन 3 to 5 3 8 3 11 1 12. सेम दिस इज कॉल्ड योर आइसोपेंटेन और 2 मिथाइल पेंटेन. कॉमन नेम इज आइसोपेंटेन. IPS नेम इज 2 मिथाइल ब्यूटेन.
2 methyl butane. Clear? Another way, there is a neopentane 1 2 3 4 5. So we can write also like this. This is your CH3 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 CH3. So I can represent this one also. This is neopentane. This is your neopentane. So my dear students, what you are observing, having same molecular formula but different in the arrangement of their carbon chain. एटी carbon chain टा सड़क अच्छी, एटी branch अच्छी, एटी आउरी मध्य branch हो जाइए. जितने अधिक branch है जो molecular strength कमी जो, molecular strength कमी गले boiling point कमी जो, तार character properties reaction सब change है जो. So that means having same molecular formula but different in the arrangement of a carbon chain. Such type of a compound chain isomerism is shown in all types of organic. Alkane देखे परिवो, alkene देखे परिवो, alkyne देखे परिवो, alcohol देखे परिवो. Any class of organic compound जदि नबो सबु केस रे हमें मध्य represent करि परिवे carbon chain. So we can change the carbon. Clear? जदि carbon chain को मु change कर देली, this is your chain isomers. That is called your chain isomers. बुझि पारलो पिला माने? Same molecular formula but different in the arrangement of carbon chain. Then second type of structural isomerism देखिया. Second is your position isomer. Position isomers. What is position isomerism? Position isomer. Two or more compounds having same molecular formula. Two or more compounds having same molecular formula but different in their position of their substituents or multiple bonds or functional groups. Like these are called your position isomers. Organic compound having same molecular formula but different in the position of their substituents or double bond or triple bond or functional group. जदि एमानकर position change हो जाउची समान formula था कि तला मैं एटा को से समय कोन कहबा position isomerism. For example मु कहउची देखो पिला माने गोटे molecular formula कहउची suppose C4H9Cl. This is a molecular formula. I am representing this 1 2 3 4. Okay, then chlorine. What you are observing? CH3 1 2 3 4 1 2 3. So put करछ हाइड्रोजन कार्बन वैलेंस 4 देखिकी तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हेला बर्तमान ए कंपाउंड को कोन पडिबी 1 2 3 4. दिस कंपाउंड नेम इज 2 chloro butane. 2 chloro butane. नाउ ए फार्मूला मु आउ केम रिप्रेजेंट करछ देखो 1 2 3 4. क्लोरीन दा सपोज मु 8 पोजीशन में देछि. So this is your what naming 1 2 3 4. This name is 1 chlorobutane. 1 chlorobutane. So what is 1 chlorobutane and 2 chlorobutane? These are relation kon position isomers. These are position isomers. कारण chlorine रो position देखो एटी 1 position रे अछि, एटी chlorine रो position कोन 2 position रे अछि. This is 1 chlorobutane. This is a 2 chlorobutane. These are position isomerism. Another example, suppose let's say another compound C4H8. I am writing butane 1 2 3 4 double bond CnH2 and alkene CH3 CH 213 CH CH3. What is the name of this compound? This name is your 1 2 3 4. This name is but2ene. but2ene. Same molecular formula अछि. मुझे देखो से C4H8 को मु रिप्रेजेंट करछि देखो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड टा ए पोजीशन को आइले 1 3 से 2 3. So what you are observing here? से कार्बन चारटा अच्छी 1 2 3 4 हाइड्रोजन 8टा अच्छी 3 2 5 1 6 2 8 से चारोटी कार्बन अच्छी हाइड्रोजन 8टी अच्छी एटी मते से चारटा कार्बन हाइड्रोजन 8टा अच्छी तो आकु मु एई भली रिप्रेजेंट कला ना होची but2ene. आकु एई टाइप रे मु रिप्रेजेंट कल दिस इज but1ene. So but2ene and but1ene, these are which isomers? These are position isomers. These are position isomers. So my dear students, position isomer kaha कहबा? Two or more organic compounds having same molecular formula but different in the position of their substituents of the compound or double bond or triple bond or functional group. Suppose another example. Let's suppose this compound C3H8O CH3 CH2 CH2OH. Clear? So this compound, let's see what is the name of this compound. Carbon 3टा अछि 1 2 3 हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 एक 8 ऑक्सीजन गोटे. So C3H8 सब ठीक अछि. This compound name is 1 2 3 प्रोपान प्रोपेन प्रोपान ई कटि जे प्रोपान 1OL. जब ठीक है मॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला को मु रिप्रेजेंट करछु देखो पिला माने
1 2 3 ये OH लगेली CH3 CH3H. What is the 1 2 3? This is 2 propanol, propan 2 OL. This is 1 propanol, this is 2 propanol. So 1 propanol and 2 propanol are relation kono na kono position isomers. Kana it functional group position isomers. Clear? So position isomer dekhai pare. But some organic compounds containing the functional group like your aldehyde, like your carboxylic acid, like your cyanide compound, clear, like your ester group, they do not show the position isomers. They do not show the positional isomerism. Why? Because their carbon atom is a terminal point. So the naming will be counted from this direction. So a functional group mane amar position isomerism dekhai paribe nahi. Alcohol, ketone ये सब देखे पारिबे 2 butanol, clear, 1 butan 2 butan 4 butan sorry 2 butanol, pentanol, 3 pentanol, these are your position isomers. So my dear students, same molecular formula थिबो जदि functional group हो किमा double bond हो किमा substituent माने तांकर position change कले, that is called a position isomerism. Next we will discuss after position isomerism, they will discuss another isomerism, your functional isomerism. This is also very important, functional isomerism. It is important darkar madhya second year ko. What is functional isomerism? Structural 3 number point, functional isomerism. What is functional isomerism? Functional isomerism kono two or more organic compounds having same molecular formula but different in the representation of the functional group. जदि functional group अलग अलग represent करियो ताको हमें कहया कोन functional isomerism. For example कहूची गोटे suppose this is the organic compound C3H6O. This is one organic compound molecular formula. मु ए compound को represent करछु देखो पिला माने 1 2 3 CHO. Clear? आउ जने represent करछु देखो 1 2 3 C double bond O. Same molecular formula. Hydrogen put करो एटी CHO को फिटेले जानि परिबो CHO C double bond OH aldehyde 1 2. This is a CH3. What is this compound? This compound is your 1 2 3 propanol, propanol aldehyde. The functional group is CHO aldehyde. So same and this compound देखो CH3 C double bond O. This compound is your propan 2ON, propan 2ON ketone. So my dear students, एतरे कौन अछि गोटे मॉलिक्यूलर फार्मूला मु रिप्रेजेंट करछि डिफरेंट रे जोटी दिजन जाकर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग आसुछि से समय मु एटा कोन कहि परिबी फंक्शनल आइसोमरिज्म कोन कहि परिबी फंक्शनल आइसोमरिज्म का कहजो two or more organic compound having same molecular formula but representing the different functional group are called functional isomers, and this phenomenon is called your functional isomerism. Sir आपण जानछन्ती कहि देला हमें केम जानू ता फार्मूला अछि. So formula wise जदि हम चेंज कर जानि परिबा those compounds which are under the formula of CnH2NO से मानकर फंक्शन aldehyde रो फंक्शनल आइसोमर आसीबो हमर कीटोन. जो फार्मूला रे aldehyde को रिप्रेजेंट करि परिबो ठीक से फार्मूला कीटोन को रिप्रेजेंट करि परिबो. अनदर फार्मूला CnH2NO2. It is acid, the acid carboxylic acid, your carboxylic acid. You can represent this compound carboxylic acid where the functional isomer of carboxylic acid is जो थरे formula represent करे से formula रे ester represent करि पारे ester. Another CnH2n plus 2O. So this is alcohol. Alcohol रो functional isomer होची ether. So my dear students, ए भली भाबरे another formula if you want to represent CnH2n minus 2 alkyne. So alkyne functional isomer is alka diene. So these are functional isomers. Aldehyde functional isomer ketone, carboxylic acid functional isomer ester. Clear? Ester. Then ether alka diene like this. So my dear students, now आम एम एग्जाम्पल भी दे पारे. देख aldehyde ketone तो ऑलरेडी कहि सारे C3H6O नहीं रिप्रेजेंट कली. आर गोटे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल आइसोमर ईस्टर जो फॉर्मूला रे मो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करि परिबी से फॉर्मूला रे मो ईस्टर को मध्य रिप्रेजेंट करि परिबी. देखा जाऊ तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे फॉर्मूला मु नेछि कोन कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल फॉर्मूला CnH2NO2 सपोज C3H6O2. दिस इज ए फॉर्मूला रिप्रेजेंट CnH2NO2 ए फॉर्मूला द्वारा मो कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्रेजेंट करी तीनोटी कार्बन अछि 1 2 3 COH फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OOH
दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड COH ओपन करके लिखले न डायरेक्ट भी लिखि पारिबी एटी हाइड्रोजन दीटा बॉन्ड करबा कार्बन दीटा बॉन्ड करियो जोटे बॉन्ड अछि CH3 नाउ लेट्स सी द फार्मूला CH3 CH2 COH or we are writing directly CH3 CH2 COH what is the name of this compound तीनोटी कार्बन अछि प्रोपानोइक एसिड क्लियर ठीक सही फार्मूला C3H6O2 को मु रिप्रेजेंट कभी ईस्टर रे ईस्टर देखो RCOR ईस्टर रो जनरल फार्मूला यू नो RCOR CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 दिस इज ईस्टर मिथाइल इथानोएट और मिथाइल एसीटेट क्लियर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला अछि कार्बन 1 2 3 सो दिस इज COR ईस्टर जनरल फार्मूला यू नो COOR RCOR so CH3 COO CH3 this is name is methyl alkyl alkanoate methyl ethanoate so एसिड रो फंक्शनल ग्रुप हो के ईस्टर जो फार्मूला रे मु एसिड रिप्रेजेंट करि परिबी से फार्मूला रे मु ईस्टर मध्ये रिप्रेजेंट करि परिबी अनंतर अल्कोहल रो फंक्शनल आइसोमर के इथर अल्कोहल रो जनरल फार्मूला आनी परिबो हम CnH2n+2O लेट्स सी वन एग्जांपल ऑलरेडी आई C3H2n C3H8O C3H8O को मु अल्कोहल रे प्रेजेंट करि परिबी इथर रे प्रेजेंट करि परिबी अल्कोहल रे प्रेजेंट करछु तीनटा कार्बन 1 2 3 जे कोन से जगह OH लगाई परिबी अल्कोहल माने OH लागिला हाइड्रोजन पुट करो CH3 एटा CH3 1 2 3 4 सो C3 कार्बन तीनोटी अछि हाइड्रोजन 3 3 6 1 7 1 8 ऑक्सीजन C3H8O मु ताको अल्कोहल आकर लिखला ना अछि कोन प्रोपान तीनटा कार्बन अछि प्रोपान 2OL बा 2 प्रोपानोल आको मु इथर रे रिप्रेजेंट करि परिबी इथर रे सपोज मु रिप्रेजेंट करछि CH3 CH2O CH3 इथाइल मिथाइल इथर फंक्शनल ग्रुप समस्त जानछो O सो फंक्शनल ग्रुप भीतर तो आइडिया रहिया दरकार आइसोमरिज्म पढ़छे माने सो माय डियर स्टूडेंट्स जो फार्मूला रे मु अल्कोहल को रिप्रेजेंट करि पारि से फार्मूला रे इथर को भी रिप्रेजेंट करि पारि अनदर अल्काइन रो अल्का डाइएन सपोज अल्काइन गोटे अल्काइन कंपाउंड होछि C4H6 अल्काइन रो जनरल फार्मूला मु ऑलरेडी कहिछि CnH2n-2 ए फार्मूला को मानुछि सो 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड गोटे देबी अल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड देली सो 314 2 2 4 CH3 दिस नेम इज कॉल्ड योर व्हाट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड ना कोन आसीबो 1 2 3 4 चारटा कार्बन अछि ब्यूट 1 YNE चारोटी कार्बन अछि 6टा हाइड्रोजन अछि 3 2 5 सॉरी से 2 3 1 भूल लगे देली यस सो कार्बन चारटा अछि हाइड्रोजन 6टा अछि 1 2 3 4 हाइड्रोजन 3 2 5 6 आको मु रिप्रेजेंट करि परिबे अल्का डाइएनी अल्काइन रो फंक्शनल आइसोमर कोन अल्काइन रो फंक्शनल आइसोमर हला अल्का डाइएनी मींस डबल बॉन्ड दिथर रहइबो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड डाइएनी जे कोन जगह डबल बॉन्ड दिथर सपोज दे देली सो दिलो एटी कोन हाइड्रोजन देखो एटी दीटा लागिवो एटी 2 1 3 हेलो 1 लागिवो 2 1 3 1 4 2 2 4 सो लेट्स सी दिस फार्मूला चारटा कार्बन अछि 1 2 3 4 हाइड्रोजन 6टा अछि 2 2 4 1 5 1 6 तो कोन पिला माने बुझिलो ने सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला अछि किंतु तांको मु अलग अलग रिप्रेजेंट करछि फंक्शनल ग्रुप रे ट्रिपल बॉन्ड इज डबल बॉन्ड दिथर अछि दिस इज योर ब्यूटा 1 2 3 4 1 3 डाइएनी ब्यूटा 1 3 डाइएनी सो ये भाव में आम पिला देखी पारिया कौन ना फंक्शनल आइसोमरिज्म विषय जानले सो फंक्शनल आइसोमरिज्म जानला पिला माने टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देखी पारिया सो दिस इज इंपोर्टेंट फॉर सेकेंड ईयर आल्सो आउ गोटे कहले मु मेटामरिज्म सो मेटामरिज्म इज नॉट सो फार इंटरेस्टिंग इट इज द चेंजिंग ऑफ द फंक्शन समस्त देखे पारिबेनी पर्टिकुलर केते गोटे फंक्शनल ग्रुप जेमते कि इथर देखे पारिबो हमर इथर कंपाउंड बल देखे पारिबो मेटामरिज्म चेंजिंग कीटोन देखे पारिबो सो फंक्शनल बोथ सराउंड रे सपोज लेट्स सी CH3 CH2 O CH3 so here two carbon atom left side of the functional group here one carbon atom left side right side of the functional group changing the number of alkyl group so I will write here like CH3 O a side is CH2 CH3 this is also functional metamers otherwise suppose let's see CH3 CH2 CH2 O CH2 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 CH3 I will write the like the metamers of this ether
इथर मुझे कौन करें मुझे चेंजिंग करें मो इच्छा CH3 CH2 एपटू गोटे नहीं जी CH2 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 CH3 एपट साइड तीन टा कार्बन थिला एपट तीन टा थिला बर्तमान मैं एपट को दीटा रखिली एपट दीटा सो मेटामॉरिज्म आर द आइसोमर्स व्हिच आर शोन बाय सम पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप लाइक योर not all type of isomers, all type of functional groups show this metamerism. Some particular functional groups which are can show this metamers, like your ether, like your sulfur group, okay, like your imine group, clear, carbonyl ketone group, like this, clear. So they will change their around the functional group. If the carbon number change, functional group रो उभय साइड रे जदि कार्बन नंबर टा चेंज हो जिवो एपट चारटा कार्बन एपट तीनटा अछि एपट तीनटा रे एपट दुईटा रे एपट नंबर वेराइटी ऑफ चेंजिंग सपोज मैं एपट लिखि देबी 3 3 6टा अछि एपट लिखि CH3 एपट लिखि देबी C5H11 किछि असुविधा नै एपट 5टा कार्बन पळे आसला एपट गोटे रहला 6टा कार्बन देयर इज नो चेंज ए बळी भाबरे फंक्शनल ग्रुप रो बोथ साइड रे थिबा कार्बन नंबर टा जदि मु चेंज करबी एपट 3 अछि एपट 3 एपट 2 एपट 4 एपट 1 एपट 5 एपट मनकर 2 एपट 4 सो दैट नो प्रॉब्लम. So alkyl group or carbon number टाउ चेंज कर देला एटा कोन कहजो ना मेटामर्स दिस phenomenon is called metamerism. And optical isomerism also and another stereoisomerism is not your NCERT syllabus also be keto or an enolic form is there, so I think not requirement, but suppose CH3 Ca double bond O CH3 if these are dynamic equilibrium with each other. So double bond it is shift hela hydrogen it is shift hela, so I will write CH2 clear. So this double bond COH CH3 this is your keto form, this is your enolic form. एटा एंट्रांस में अधिक टिके पढ़ेबा ताको नीट क्लास पढ़ला बेले. So this is keto form, this is enolic form, keto enolic form. So this type of isomerism is your tautomers. Clear, tautomers. So dynamic equilibrium double bond it shift hela it hydrogen it shift hela, so this is your keto and this is your enolic form keto enolic form. Next we will see about stereoisomerism kono. So these are the two or more organic compounds having same molecular formula but different in the spatial arrangement compound चारिपटे space रे 3 dimensional arrangement रे changing आसीबो compound रो चारिपटे 3 dimensional arrangement जो change आसला this is your stereoisomerism. So my dear students, stereoisomerism are the same molecular formula and structural formula but different in the arrangement of 3 dimensional, different in the arrangement of atoms in 3 dimensional arrangement. 3 dimensional the arrangement difference asla seda ame stereoisomerism koi pariya. This is conformational isomerism, geometrical and optical isomerism, but we will discuss about geometrical and optical isomerism ei di jona bhitar discussion kare karan tamugo ei di jona darkar 12th standard tike idea deba darkar. So geometrical and optical isomerism, basically geometrical isomerism will be seen by the multiple bond compound like your double bond C double bond or C triple bond double bond compound. Basically geometrical isomerism will see C double bond C. So it's the geometrical isomerism, two or more organic compounds having same molecular formula but different in the rotation of the atoms or molecules around the C double bond C. C double bond C re jodi around ki change asla, this is your geometrical isomerism. So geometrical isomerism is two types, siege isomer, another is a trans isomer. siege out trans isomer. Geometrical isomerism carbon double bond carbon case हम देखिया पाइबा, basically double bond compound geometrical isomerism देखै परियो siege out trans format. So my dear students, siege out trans format हम देखिया geometrical isomerism, clear. So let's see, suppose but 2Ne, but 2Ne, how I will represent but 1 2 3 4, but चारटा कार्बन अछि 1 2 3 4, 2 number position double bond अछि 2 1 3, this is your CH3, 2 1 3, this is CH3. How I will write this one? Let's see, C double bond C, C double bond C रहला H CH3, clear. Otherwise I will write like this, C double bond C H CH3, another C same side H CH3. So same side रे जदि molecule आसला, this is your siege format,
दिस योर सीज आइसोमर सीज ब्यूट 2Na जदि सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल गुड़ा वन डायरेक्शन रहा दिस इज सीज फॉर्मेट जदि अपोजिट डायरेक्शन पड़ला दे ट्रांस फॉर्मेट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अछि दिस योर ट्रांस दिस योर सीज क्लियर सीज दिस इज सीज ब्यूट 2Na and this is your trans but 2Na trans but 2Na clear cis but 2Na another is your trans but 2Na there are two types of isomers you will see cis and trans same type rohila cis and trans let's see another example geometrical isomerism will seen by double bond carbon bitra me geometrical isomerism dekhi paria suppose another example 1,2 dichloroethene right it's geometrical isomerism देखिए C 1,2 dichloroethene C double bond C eth जोड़े कार्बन अच्छी so 1,2 dichloro 1 रे क्लोरीन 2 रे भी क्लोरीन हाइड्रोजन एटी गोटे हाइड्रोजन क्लियर बर्तमान आपको कौन करिया मु रिप्रेजेंट करी geometrical isomerism C जाऊ ट्रांस रे फर्स्ट C रे करी so same type रही suppose C double bond C I will write like this Cl and H and this direction Cl and this is H so same type rohila cis I can write cis clear format I will write trans format C double or trans format kariya this is cis format trans format jodi aniba C double bond C H Cl alternate is H Cl if same group of atoms are in the opposite direction this is your trans format if the same type of group of atom in one direction same direction this is your cis format clear so two or more organic compound having same molecular formula of the containing carbon double bond carbon where the types of atom arrangement of in around the carbon double bond carbon is make the geometrical isomers where one is a cis format another is a trans format जदि देखियो dipole moment that is a vector quantity so carbon chlorine with the dipole moment देखियो dipole moment of a cis format trans format is 0 opposite direction where dipole moment of a cis is greater than 0 clear बुझे तो सी जाऊ ट्रांस फॉर्मेट रे सो देयर इज ऑलरेडी हम पढ़े ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 11 स्टैंडर्ड जानिया पे खाली कहूँ इन केस ऑफ आउ गोटे फॉर्मेट तुम पढ़ी ई आउ जेड फॉर्मेट ताको एंट्रांस में पढ़ा ई ओके एंटीजन एंड एंटीजन फॉर्मेट सो चार्टा ग्रुप अलग अच्छी पिला माने कौन करा जीवो सपोज ये क्लोरीन अच्छी ये ब्रोमीन अच्छी ये फ्लोरीन अच्छी ये सपोज अच्छी आयोडीन अच्छी तो चार्टांग ग्रुप किंतु अलग अच्छी इज कैन इट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ए कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखे पारिबो यस देखे पारिबो एट दैट टाइम वी कैन यूज द वर्ड ई फॉर्मेट एंड जेड फॉर्मेट ई आउ जेम एंटीजन दिस इज ई स्टैंड्स फॉर योर एंटीजन एंड जेड स्टैंड्स फॉर योर जुसामेन ए टाइप रो केमिनि करिया जदि अलग अलग ग्रुप रहला देन विल फॉलो द प्रायोरिटी ऑफ देयर एटॉमिक नंबर लेट्स सी क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटॉमिक नंबर कार अधिक ग्रुप 17 पीरियड टेबल हालोजेन अच्छी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो क्लोरीन और ब्रोमीन भितर एटॉमिक नंबर कार अधिक क्लोरीन ब्रोमीन अधिक तो जार अधिक से 1 क्लोरीन ताठू कम 2 क्लियर एपट साइड फ्लोरीन और आयोडीन एटॉमिक नंबर कार अधिक आयोडीन 1 आउ फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कम अच्छी 2 तो जार एटॉमिक नंबर ताकू 1 पोज दबा जार एटॉमिक नंबर 2 ताठू कम अच्छी 2 दबा सो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी देखिए आम 1 2 1 2 दबा बर्तमान देखा जब सिमिलर टाइप रहा सेम टाइप रहा जब सेम टाइप गोटे टाइप रहा दिस इज योर व्हिच फॉर्मेट दिस इज योर जेड फॉर्मेट दिस इज योर जेड फॉर्मेट क्लियर जदि अपोजिट साइड रहा सपोज ये टाइप था सी डबल सपोज दिस इज योर सी डबल बॉन्ड सी क्लोरीन ब्रोमीन if this is iodine and this is fluorine so it 2 এটা কোন থিলা 1 clear so now it is your 1 it is your 2 तो जब ऑपोजिट साइड रे रही गला सेम टाइप रो 1 1 ऑपोजिट डायरेक्शन रहिला it is your which format it is your e format e this is called antigen so this is called your antigen format if opposite side रे similar रहिला this is your antigen format this is your z format or Jusaman format clear so this is about the geometrical isomerism एते सब +2 नहीं दरकार नहीं ई जेड +2 से लेवल नहीं रहा एंट्रेंस में पढ़ुचे तथापि जानता आउ गोटे टाइप लास्ट आइसोमरिज्म टे कहि दउछ आइसोमरिज्म ऊपर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑप्टिकल माने मिरर संबंध जानिथिबो केते गोटे कंपाउंड अछन जे माने लाइट ऊपर पड़ले से कंपाउंड रोटेट हो
they will plane polarized light. Okay, they will radiate the plane polarized light. These compounds are optical active compound. So optic simple हो mirror. तमें जब mirror आगे ठिया हो हाथ देखिकी तार mirror image टा कौन आसी left lateral inversion आसी जब mirror आगे मुझे ठिया हली mirror रे आम छविटा कौन आसूची ना lateral inversion left टा right की देखा जो right टा left देखा जो पिला माने ए वीडियो रे आम टोटल पढ़ुछ isomerism. Isomerism रो मीनिंग होची कौन गोटे मॉलिक्यूल फॉर्मूला समान थी ताको अलग अलग वे रे रिप्रेजेंट करवा सिंपल कॉन्सेप्ट गोटे मॉलिक्यूल फॉर्मूला समान थी ताको जदि अलग अलग वे रे रिप्रेजेंट करवा जो रिप्रेजेंट करवा सब अलग अलग गोटे गोटे आइसोमर कहजिवो एवं सेमानकर कैरेक्टर सब अलग सो हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट विथ डिफरेंट कंपाउंड्स two or more organic compound having same molecular formula but they have different properties they are called isomers तो आम विभिन्न प्रकार आइसोमर विषय जानले सो एटा गोटे लास्ट आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म विषय टिके जानिबा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑप्टिक माने मिरर सपोज दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय द कंपाउंड लाइक व्हिच ऑफ at least one chiral carbon atom asymmetric carbon atom clear suppose गोटे कंपाउंड कोची this type of compound optical isomerism one thing is suppose mirror upar dekho suppose what happening when we are presenting in mirror clear this is chiral non superimposable suppose p achiral what happening suppose p how it is written like q like this represent chiral carbon non superimposable clear so that means see what happened this is your chiral means this mirror image non superimposable clear so जदि आम देखा in order to exhibit optical activity an object must be chiral देखो optical activity optical isomer विषय आम 11th 12th standard भी अच्छी आम पढ़ेगा ऑप्टिक माने मिरर आग तुम जान सपोज गोटे कंपाउंड अच्छी कार्बन अच्छी सपोज ये अच्छी ए अच्छी ये बी अच्छी ये पी अच्छी ये क्यू अच्छी पे बुझिपार यहाँ गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर देखा ऑप्टिकल आइसोमर जब मिरर आगे रखा तो लैटरल इन्वर्सन आसो सो ओनली चेंजिंग द पोजिशन क्यू इज विथ दिस साइड एंड दिस इज पी एंड दिस इज बी कौन देख लेफ्ट राइट की पड़े राइट लेफ्ट को आसी दिस इज योर ऑप्टिकल आइसोमर्स तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखापी फास्ट मेन वाला क्राइटेरिया द कार्बन शुड बी chiral carbon atom the carbon should be chiral carbon atom the carbon should be chiral carbon atom so what is chiral carbon atom chiral carbon chiral हम कहूँ chiral carbon atom means it is asymmetric carbon atom asymmetric what is asymmetric ए कार्बन रो चारिपट जो ग्रुप हो समस्त अलग थिबा दरकार चारटांगा आटम चारिपट जो थी जो अलग थिले ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखाई पारियो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म if it moves towards the light towards the left or right if it moves towards right dextro form another is levo form D and L format example गोटे दउछि जानि पारियो समस्ते so let's see the isomers of lactic acid पिला माने lactic acid रो फार्मूला एटा तो lactic acid तो जब मुझे ऑप्टिकल आइसोमर करी इट इज मिरर इमेज गोटे मिरर आगे रखा मिरर इमेज कौन आसो दिस इज मिरर इमेज सो लैटरल इन्वर्सन हम लैटरल इन्वर्सन रोटेट होती सो एच अच्छी ओएच टाइप को आसी बुझे तो डेक्स्ट्रो फॉर्म एंड लेवो फॉर्म दिस इज डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी एल फॉर लेवो सो डेक्स्ट्रो और लेवो फॉर्म दुईटा आसो सो मिक्सचर ऑफ डीएल इज कॉल्ड योर रेशमिक मिक्सचर जहाँपर मुझे 12th स्टैंडर्ड जिते पढ़ेबी बर्तमान तुमको हालो अल्केन हालोआरिन से समय मुझे तुमको डिटेल्स से कहबी तो माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑप्टिक माने कौन ऑप्टिक माने मिरर इमेज तो गोटे कंपाउंड तार मिरर इमेज कौन आसो तो मिरर तुम हाथ में पांचटा आंगुठी मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजिबल इच अदर सो दैट इज द थिंग सो मिरर इमेज पी रमी कहते ये टाइप आसो मिरर इमेज क्लियर so this is a mirror image same molecular formula but different in the optical iso mirror image clear so a mixture of this is if light rotate towards right dextro towards left levo so dextro and levo mixture of D and L is called a racemic mixture तापर अधिक मु पढ़ेबी जेतेबेले तुमको मु 12th स्टैंडर्ड रे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेबी हालो अल्केन हालोआरिन्स ए थिला आइसोमरिज्म रो पाठ आइसोमरिज्म हम डिटेल्स कोन देखले पिला माने जे two or more organic compounds having same molecular formula different in their physical structural arrangement whatever may be arrangement रहला पर they have different physical and chemical property tam property अलग रहबो
So this is all about the video which will give the some idea about the isomerism. आउ तो मो डिटेल्स पढ़ेबेनी 11th स्टैंडर्ड जति की बट शॉर्ट वीडियो तमर किसी आइडिया आसे पे आइसोमरिज्म कहले. सो कीप वाचिंग द आइसोमरिज्म वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो रे हम देखिया जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. थैंक यू.